see if there are no overlapping timings, and I think I'm fine with that time. Okay. क्योंकि I just have the two slots. It's वो वाला which your mom said yes to earlier and the one which I just sent. So you could if you could just make sure on your own कि if it's not there ताकि I can just assign other students जिनको मैं पढ़ा रहा हूँ. So according to that, Oh, okay. if So can you just like tell me what time it is? Because I have the timings with me right now. yeah, just give me 1 second. I just opened the chat. Uh, yeah, this is Sunday, Monday, and Tuesday, 3:30 to 4:30. 3:30 to 4:30. Guess so. Yeah, I'm free at that time. Yeah. Right. So then I'll just book you for that slot. So, okay. So is the screen visible? Yes, it is. Right. So, Bismillahirrahmanirrahim. Let's just start. तो हमने पिछली क्लास में बात की थी about selection. We did not talk about evolution obviously because that's the next topic. Selection की हमने बात की थी कि this is simply variation, which is differences between organisms belonging to the same species. Just 1 second, I have opened the wrong notes. अच्छा, yeah. So it's simply the variation between organisms which belong to the same species. Variation दो types की थी, phenotypic and genetic. Phenotypic variation was caused due to two factors, and either of these two factors could play a role in in producing a difference between the observable features of organisms जो कि same species हैं. That's genetic variation and the environment. फिर हमने genetic variation के बारे में भी देखा था and continuous variation and उसकी genetic basis को भी देखा था. Today, we're going to be starting with discontinuous variation. And once that's done, we're going to compare continuous and discontinuous. And उसके बाद we'll start with evolution. So first things first, discontinuous variation. जिस तरीके से continuous variation में phenotypes के बीच में differences quantitative थे, measurable थे, हम उनको measure कर सकते थे, उसी तरीके से in discontinuous variation, the phenotypic differences or the differences in the phenotype are qualitative. And again, another word for qualitative is that they are not measurable. हम उनको measure नहीं कर सकते. Basically, what we were talking about in last class, हम वो sentence नहीं use कर सकते कि ये phenotype ज़्यादा है या ये phenotype कम है. It's not something which you can quantify. So, for example, and we used this example earlier as well, blood group. Can we say that blood group A is higher compared to blood group B? Can we say that? No. We can't say that क्योंकि it's not like height के कोई चीज ज्यादा या कोई चीज कम है. They do not fall in the same scale. Blood group A is different, blood group B is different, O is different and AB is different. हम ये नहीं कह सकते कि A ज्यादा है या greater है compared to AB. That's not possible. And number two, it has distinctive categories. जिस तरह से blood group के पास होती है. This is why blood group is an example of discontinuous variation. So discontinuous variation में three things. Number one, phenotypic differences are qualitative. Number two, there are distinctive categories जो कि present होती हैं. And then number three, there are no range या intermediates जो कि exist करते हैं. इसका मतलब कि you will never find something in between A, AB, O, and O. There is no blood group in between, but there are many heights in between 1.01 and 1.02. यहाँ पे एक बहुत बड़ी रेंज है, बहुत सारे इंटरमीडिएट्स हैं, बट यहाँ पे ब्लड ग्रुप वाले एग्जांपल में there are no intermediates, it's particular categories, there are no ranges. So this is the table जिसकी मैं बात कर रहा था, continuous versus discontinuous. Let's just quickly revise this. Continuous variation में range of phenotypes, यहाँ पे no range. Continuous variation में no distinctive categories, यहाँ पे there are distinctive categories. In continuous, the phenotypes are measurable, quantitative, and here they are qualitative. Continuous में intermediates होते हैं, यहाँ intermediates नहीं होते. Continuous में every allele has a small effect on genotype. The polygenes topic we talked about.
And you could remember it like this: too many cooks spoil the broth. And yeah, that's pretty much it. अच्छा, सो अगली चीज हमें जो देखनी है इज व्हाट इज द जेनेटिक बेसिस ऑफ डिसकंटिन्यूअस। जैसे हमने कंटिन्यूअस वेरिएशन की यहाँ पे देखी थी कि पॉलीजीन्स की हमें डेफिनेशन लिखनी है, फिर all of the different alleles belonging to the polygenes, each one of them will have a small effect on the phenotype. And number three, it can be also be caused by the environment. उसी तरीके से डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन होने का एक जेनेटिक अंडरस्टैंडिंग है, एक जेनेटिक बेसिस है। एंड व्हाट्स दैट? इट इज नॉट कॉज्ड ड्यू टू द एनवायरनमेंट, it is affected by one gene only, and the alleles have a large effect on the phenotype. So basically, the complete opposite of continuous. वहां पे environment की वजह से भी cause होता था, यहाँ पे नहीं हो रहा। वहां पे polygenes थे, यहाँ पे सिर्फ एक जीन है। वहाँ पॉलीजीन्स में हर एलील का इफेक्ट होता था, एंड ईच इफेक्ट यूज्ड टू बी स्मॉल क्योंकि बहुत सारे एलील्स थे। यहाँ पे एलील्स हैव अ लार्ज इफेक्ट ऑन द phenotype. So do you understand the differences between continuous and discontinuous? Yeah, I do. Okay. Now let's talk about आज का मेन टॉपिक, which is the topic of evolution. ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत से बच्चों को थोड़ा बहुत बोरिंग भी लगता है बिकॉज बहुत सारी थ्योरी है इसमें, बट इट्स रियली इंटरेस्टिंग इफ यू हेयर इट द एंटायर वे। अच्छा, लेट्स सी। सबसे पहला पॉइंट जो हमें समझना है वो ये, एवोल्यूशन होता क्या है। एवोल्यूशन का मतलब कि कोई भी चीज इवॉल्व कर रही है, कोई भी चीज जो अपनी ओरिजिनल स्टेट में है कुछ देर बाद अपनी ओरिजिनल स्टेट में नहीं रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टॉक अबाउट, सो यू टेक केमिस्ट्री, राइट? अच्छा, केमिस्ट्री में हैव यू लर्नड अबाउट द रिएक्शन काइनेटिक्स का चैप्टर? Yes, I have. या तो वो रिएक्शन काइनेटिक्स के टॉपिक में देयर वर सम पर्टिकुलर कंपाउंड्स व्हिच वर कॉल्ड एज इंटरमीडिएट्स। इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं? Yeah, basically they're like some the middle what could you call it? कंपाउंड्स, या। Yeah, it's a compound that's formed in the middle, but it's like unstable. It's unstable, so it is immediately used up in the next step of the reaction. Yeah. Yeah. या तो वो अनस्टेबल होता है, तो वो अपनी स्टेट को चेंज कर लेता है। पहले वो जिस स्टेट में था, आफ्टर द एंड ऑफ द सेकंड स्टेप वो स्टेट में नहीं रहेगा। यू कुड कॉल दैट, नॉट रियली बट यू कुड टेक्निकली कॉल दैट कि वो सब्सटेंस इवॉल्व हुआ है। अब एवोल्यूशन हम केमिकल्स की फॉर्म में नॉर्मली नहीं बात करते बायोलॉजी में। इट दैट एग्जांपल वाज जस्ट टू एक्सप्लेन कि एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज की स्टेट चेंज होना। Now, let's talk about organisms. Let's take a person. Let's call this person person A. क्या person A अपनी पूरी लाइफ के दौरान, so from the time this person is born till the time this person dies, क्या उस person में evolution का process हो सकता है उस एक person में? No. No, this is the first point that we need to understand. The same organism does not undergo evolution. Evolution is a very, very, very slow process. This process takes place across generations. बहुत सारी theories हैं। Humans will first monkeys, फिर वो एक दूसरी form में evolve हुए, फिर एक और form में, फिर एक और form में, to Homo sapiens, what we are now. This was a process which was very, very slow. जनरेशंस के अक्रॉस हुआ था। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। जो हाथ होते हैं या जो नोज होती है, नोज की विड्थ 0.1 मिलीमीटर इंक्रीज करने के लिए 1000 या 100 साल लग जाते हैं। यू सी हाउ स्लो ऑफ अ प्रोसेस इट इज। इट टेक्स प्लेस अक्रॉस जनरेशंस। एक ऑर्गेनिज्म के अंदर हमें एवोल्यूशन नहीं दिख सकती कि एक बंदा है, उसकी नोज की विड्थ इतनी थी, फिर बाय द टाइम ही डाइड नोज की विड्थ डबल हो गई। दैट्स नॉट पॉसिबल। The same organism, or you could say within the same organism, evolution का process नहीं हो सकता। The same organism does not undergo evolution. Evolution is a process which takes place across generations. सबसे पहली चीज। तो दूसरी चीज, whenever we talk about evolution का process, it's not like कि
लेट्स से हमारे पास एक जनरेशन थी, जनरेशन ए, जनरेशन बी, जनरेशन सी, जनरेशन डी एंड देन जनरेशन ई। अब फ्रॉम ए टू ई एवोल्यूशन का प्रोसेस हो रहा था, लेकिन ये नहीं हो सकता कि ए टू बी में एवोल्यूशन का प्रोसेस हुआ, ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व हुए फ्रॉम ए जनरेशन टू बी, लेकिन बी टू सी में वो इवॉल्व नहीं हुए, सी टू डी में नहीं हुए और डी टू ई में हो गए। इट्स नॉट अ स्टार्ट एंड स्टॉप प्रोसेस कि यहाँ पे होगा, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे रुक जाएगा। नो, एवोल्यूशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। इट नेवर स्टॉप्स फॉर एनीबडी, any environment, nothing. It is a continuous process. अच्छा, फिर दूसरी चीज, एवोल्यूशन जो प्रोसेस है उसका कोई एंड गोल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जो मैं अभी बात कर रहा था, नोज की विथ चेंज होना, changing the width of the nose has no end goal. It's just a process which takes place across generations. उसका कोई एंड गोल नहीं है, हमें किसी फिनिश लाइन तक नहीं पहुंचना है विद द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। इट्स जस्ट अ नेचुरल प्रोसेस, सो देयर इज नो एंड गोल। अच्छा, फिर नंबर थ्री, दिस प्रोसेस मे बी रैंडम and purposeless. Yeah, without any purpose, जिसे futile भी कहते हैं. So let's take an example. So have you ever noticed कि when a person's hands बहुत ज्यादा देर तक पानी के साथ कांटेक्ट में रहते हैं, तो थोड़ी बहुत फिंगरप्रिंट दिखना शुरू हो जाती है? It becomes a bit weird, the skin of the hand, Yeah. द द फिंगर रफन्स अप। ये इसीलिए होती है क्योंकि बॉडी की एक अडेप्टेशन है। व्हेनेवर यू कीप योर हैंड इनसाइड वाटर फॉर टू लॉन्ग, ये जो फिंगरप्रिंट है ये थोड़ी उभर आती है। व्हाई इज दैट? बिकॉज द बॉडी इज अज्यूमिंग कि इस वक्त हम डेंजर में, बॉडी इस वक्त डेंजर में, एंड वी आर इन वाटर एंड वी आर ड्राउनिंग एंड वी नीड समथिंग इन ऑर्डर टू हेल्प अस क्लाइंब आउट ऑफ द वाटर। सो सपोज एक माउंटेन है सामने, और हमें उस माउंटेन पर जब हम अपना हाथ रखेंगे, ताकि हमारा हाथ स्लिप ना हो जाए, इसीलिए वो जो फिंगरप्रिंट है वो बहुत ज्यादा उभर आती है या वो बहुत ज्यादा हार्डन हो जाती है। क्यों? ताकि हमारा हाथ स्टिक रहे उन माउंटेन्स पर जब हम हमारा हाथ उस पर रखें। सो इट्स बेसिकली अ बॉडी की अडेप्टेशन। अब ये पहले नहीं थी, ये जनरेशन के अक्रॉस हुई। दिस वॉज एन एवोल्यूशन का प्रोसेस जो कि हमारे लिए फायदेमंद था। इट हैड अ पर्पस, बट नॉट एवरी एवोल्यूशन रिजल्ट हैज अ पर्पस। सम ऑफ देम पर्पसलेस भी होते हैं बिकॉज इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। हम उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। वी कैन नॉट मेक एवोल्यूशन टू बी व्हाट वी वांट इट टू बी। इट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, इट कैन नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू अस। सो इसलिए ये रैंडम भी होते हैं। सो कैन नॉट बी predicted. So do all of these points make sense? Yeah, they do. Okay. अब इसके बाद एक सेकेंड, कैन नॉट बी predicted. All right. अच्छा, इसके बाद लेट्स टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ एवोल्यूशन। P4 में बहुत ज्यादा ये आ जाता है, डिफाइन एवोल्यूशन। तो फिर हाउ डू वी डिफाइन एवोल्यूशन? एवोल्यूशन एक्चुअली में होती क्या है? These are simply the differences between the characteristics of the organisms belonging to the same species. यहाँ पे भी we are comparing two organisms which are belonging to the same species, और उन दो organisms के बीच में हम देख रहे हैं कि characteristics में difference क्या है. So we are looking at the differences between the characteristics of organisms belonging to the same species. अच्छा, लेट मी आस्क यू दिस, कैरेक्टरिस्टिक्स का तो ऑब्वियसली मतलब होता है कि phenotypic डिफरेंसेस है। phenotypic वेरिएशन कैसे आ सकती है? व्हाट आर द टू फैक्टर्स? Taking me according
because of the genotype and because of the environment. Environment, बिल्कुल, genotype and the environment. So let's take aside environment for a second and let's talk about genetic variation, which you said genetic variation का मतलब होता है different genotypes. So let's take an example. Suppose हमारे पास एक generation है called generation A. Generation A evolve हुई और उसने फिर obviously produce की generation B. Generation A में there was a genotype एंड इस जीनोटाइप का कॉम्बिनेशन था कैपिटल बी कैपिटल पी। अब ये कौन सा एलील है, कौन सा जीन है ये? सो लेट मी एक्सप्लेन दिस राइट हियर। इन आवर एग्जांपल वी आर टेकिंग अ जीन that codes for body color, and this gene obviously has two alleles, the capital B allele and the small b allele. सो कैपिटल बी एलील जो है, इसका जो डोमिनेंट रेट है दिस इज पर्पल, कि पर्पल कलर के लिए कोड करता है। एंड रिसेसिव ट्रेट जो है स्मॉल बी एलील जब एक्सप्रेस होती है, सो द फिनोटाइप बिकम्स रेड। तो इस जनरेशन ए में जो बहुत सारे जीनोटाइप्स है, सो दिस इज द फर्स्ट पर्सन, उस पहले ऑर्गेनिज्म के अंदर द जीनोटाइप की कॉम्बिनेशन है कैपिटल बी कैपिटल बी, होमोजाइगस डोमिनेंट, दिस इज पर्पल। वी हैव अनदर ऑर्गेनिज्म कैपिटल बी कैपिटल बी, another one capital B, small b. Now, how many alleles do you see in these three cases right here? Alleles. Two. You see two types of alleles, but how many different number of alleles do you see? Oh, one. Uh, Not quite. So isn't it one, two, three, four, five, and six? So we count them separately? Yeah, you can count them separate. So when मैं ये पूछ रहा हूँ कि what are the total number of alleles you see in these three cases? अब types of Oh, alleles तो okay. उसमें two हैं, So capital B and small b. six. Six, बिल्कुल. In this case, you see six alleles. How many of these six alleles are capital B? Five. Five. तो अगर हमें एक sort of ratio बनाना हो जहाँ पे न्यूमरेटर में we have the number of capital B alleles and denominator में we have the total number of alleles. So this is going to be 5 divided by 6. What's 5 divided by 6 times 100? So if I can have a calculator, 5 over 6 times 100, this is 83.3%. अब ये percentage है क्या and why are we calculating this? This percentage right here is something called the allele frequency. Have you learned about this in school? Yes, I have. Yeah. So what is actually allele frequency? Yeah, so basically it's like the I think you could like define it as like the occurrence, like how many times it occurs or Hmm. like that. Okay. How many times it occurs? Because that's a good explanation. तो allele frequency हम ऐसे कह सकते हैं कि what is the frequency of the allele being repeated in a particular generation. So frequency अगर हम maths में जाएं तो frequency क्या होती है? How many times a particular thing has happened. Or if you talk about physics, frequency of a pendulum moving. तो उसका मतलब कि कितनी बार pendulum move किया. Frequency of a wave. कितनी वेव्स पास हुई हैं, उसी तरीके से फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एलील, कितनी बार एलील रिपीट हुआ। तो एलील फ्रीक्वेंसी 83.3% है। कुड यू टेल मी द एलील फ्रीक्वेंसी फॉर द स्मॉल बी एलील? One. Are you Oh sure yeah, yeah, yeah. एलील Sorry. I have to calculate. Yeah, just a second. 16.7. 16.7%, बिल्कुल। तो यहाँ पे अगर हम स्मॉल बी एलील की अगर हम एलील फ्रीक्वेंसी देखें, सो इट्स गोना बी 16.7, दैट्स व्हाट यू सेड। Yeah. या सो ये हमारी एलील फ्रीक्वेंसी है। नाउ व्हाई आर वी कैलकुलेटिंग दिस? क्योंकि अभी हम देखेंगे कि एलील फ्रीक्वेंसी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन अंडरस्टैंडिंग कि हाउ डज एवोल्यूशन एक्चुअली वर्क। लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस।
अब जनरेशन ए थी, जनरेशन बी में अब लेट्स सी कि किस तरीके की जीनोटाइप के कॉम्बिनेशंस होते हैं। सो वी हैव स्मॉल बी स्मॉल बी, स्मॉल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, small b, small b, small b, small b. Could you tell me the allele frequency for the capital B allele, but now in the second generation, generation B? So it's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 alleles, 10%? 10%. And what about the small b? So, 90%? bilkul, 100 minus 10 is 90%. You see the shift in the allele frequency? Yeah. पहले कैपिटल बी एलील 83.3% था, लेकिन अब वो 10% हो गया। स्मॉल बी एलील 16.7% था, लेकिन अब वो 90% हो गया। व्हाट डज दिस शो अस? दिस शोज अस कि कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा, कुछ ना कुछ ऐसा चेंज आया होगा फ्रॉम जनरेशन ए टू जनरेशन बी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि वो ऑर्गेनिजम्स जिनमें कैपिटल बी एलील एक्सप्रेस हो रहा था, वो ऑर्गेनिजम्स डाई ऑफ कर गए। दीज ऑर्गेनिजम्स वर नॉट एबल टू रेप्लिकेट, क्योंकि अगर तो ये ऑर्गेनिजम्स रेप्लिकेट कर पाते तो फिर यहाँ पे भी बहुत सारे कैपिटल बी एलील्स और इसकी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होनी चाहिए थी, राइट? Yeah. So somehow what happened, we don't know what happened, we look at that later, but something happened जिसकी वजह से यहाँ पे कैपिटल बी एलील्स जो एक्सप्रेस हो रहे थे जिन जिन ऑर्गेनिजम्स में, वो ऑर्गेनिजम्स रेप्लिकेट नहीं कर पाए, उनकी ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस नहीं हो पाई बिकॉज दे डाइड। एंड वो ऑर्गेनिजम्स जो स्मॉल बी एलील्स जिनमें एक्सप्रेस हो रहे थे, सो बेसिकली रिसेसिव होमोजाइगस, वो ज्यादा रिप्रोड्यूस कर पाए। तो स्मॉल बी एलील की एलील फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। एंड दैट्स समथिंग कि ऐसा क्या हुआ कि एलील फ्रीक्वेंसी शिफ्ट हुई इज व्हाट वी आर गोना लुक एट। सो सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द कॉजेस, व्हाट लेड टू दिस चेंज इन द एलील फ्रीक्वेंसी। सो सबसे पहला है नंबर वन, natural selection. This is basically something you would have already done in IGCSEs. We will just be revising it and adding a lot more on top of the revision part. Natural selection. Number two, artificial selection, जिसका एक और नाम selective breeding भी है। फिर उसके बाद number three, these are two new which you haven't heard of from your IGCSEs. Genetic drift. We'll talk about this later on. And number four, mutation. So remember right now, just like 10 seconds ago, we were talking about something happened which caused the allele frequency to shift or change. That something is one of these four things which might have happened. So या तो natural selection हुई होगी, या artificial selection हुई होगी, या genetic drift हुआ होगा, या mutation हुआ होगा। Let's start with natural selection. अब I want you to look at these two words closely. Natural selection, एक ऐसी सिलेक्शन प्रोसेस जो कि नेचुरल है, जो कि नेचर डिसाइड करती है। इसका मतलब ये कि नेचर इज द वन जो कि डिसाइड कर रही है, अच्छा ये वाला ऑर्गेनिज्म गेट्स टू लिव, दिस ऑर्गेनिज्म डाइज, ये वाला ऑर्गेनिज्म आल्सो डाइज एंड दिस ऑर्गेनिज्म लिव्स। सो बेसिकली द नेचर इज द वन सेलेक्टिंग। हाउ डज द नेचर सेलेक्ट? होता ये है कि एनवायरनमेंट में एक कंडीशन आ जाती है, एक सिचुएशन पैदा हो जाती है, और इस सिचुएशन की वजह से ऑर्गेनिजम्स के बीच में कंपटीशन आ जाता है टू बी एबल टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। सो हैव यू हर्ड ऑफ द वर्ड और द फ्रेज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट? हैव यू हर्ड ऑफ दैट? Yeah, yeah, back in IGs. या सो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट था क्या कि जो ऑर्गेनिज्म सबसे ज्यादा फिटेस्ट है, सबसे ज्यादा फिट है, नॉट इन टर्म्स ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ एंड ऑल ऑफ दैट, बट फिटेस्ट टू बी एबल टू अडेप्ट टू दैट कंडीशन, टू दैट सिचुएशन जो एनवायरनमेंट में आई है, those organisms which are the fittest are able to survive. जो नहीं फिट होते वो कंपटीशन से हार जाते हैं, वो सरवाइव नहीं कर पाते, तो वो डाई कर जाते हैं। दिस इज बेसिकली नेचुरल सिलेक्शन। सो इट्स नॉट बेसिकली कि नेचर मार रहा है कुछ ऑर्गेनिजम्स को एंड कुछ ऑर्गेनिजम्स को रिप्रोड्यूस करवा रहा है, नो, इट्स जस्ट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स फाइटिंग फॉर रिसोर्सेज। एंड वी विल जस्ट फाइंड आउट इन अ सेकेंड कि कौन सी सिचुएशन में कौन सा ऑर्गेनिज्म ज्यादा फिटर है to survive and obviously reproduce.
तो natural selection, let me write this down. It's a condition, एक particular situation आ जाती है in the environment that leads to competition between organisms to be able to survive and reproduce. अच्छा, before going into the examples कि natural selection कैसे होती है, let's talk about natural selection सबसे पहले. So it is obviously one of the factors जिसकी वजह से allele frequency में change आता है. Let's write this down as well. It's one of the factors जैसे कि हमने यहाँ पे देखा leading to a change in the allele frequency. And let me ask you this. जब allele frequency change होती है, does that mean कि अब characteristics organisms के change होंगे? So for example, look at this. Allele frequency यहाँ पे change हुई. यहाँ पे बहुत सारे organisms purple थे, लेकिन अब यहाँ पे red है. क्या characteristics change हुई between organisms of the same species? Yeah. And what do we call a change in the characteristics between organisms of the same species? Evolution. The differences between characteristics of organisms belonging to same species. So what you can understand is जैसे हमने definition रख ली थी अपने लिए कि genetic variation is equal to different genotype, उसी तरीके से evolution is equal to change in allele frequency. अगर allele frequency change होती है इसका मतलब characteristics में अब difference आया है and characteristics में difference का basic मतलब होता है evolution. Okay, so this question comes up a lot in the exam. How does natural selection, or ये इतना repetitive question है, it's just asked in different situations. How does natural selection lead to a change in the allele frequency? Natural selection एक factor तो है, वो हमें समझ आ गया. लेकिन how does this factor actually lead to a change in the allele frequency? तो उसके लिए हमें समझना होगा कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स, कुछ बेसिक रूल्स, कुछ बेसिक पैटर्न्स जो जब हम नेचुरल सिलेक्शन के बारे में पढ़ते हैं तो वो हमें दिखता है. लेट्स टॉक अबाउट दैट. लेट्स टॉक अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. द फर्स्ट प्रिंसिपल इज कॉल्ड ओवर प्रोडक्शन. ओवर प्रोडक्शन हमें वर्ड से ही समझ आ रहा है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. ओवर प्रोडक्शन मतलब producing more than what is required. एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ मेट करता है और फिर ज्यादा ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करता है बियॉन्ड व्हाट द एनवायरनमेंट कैन सपोर्ट. लेट्स टेक एन एग्जांपल. सपोज करते हैं देयर इज अ वेरी वेरी रिमोट आइलैंड और उस रिमोट आइलैंड में दो ऑर्गेनिजम्स हैं. वो दो ऑर्गेनिजम्स मेट करते हैं एंड देन दे प्रोड्यूस सिक्स ऑफस्प्रिंग्स. सो हाउ मेनी टोटल ऑर्गेनिजम्स आर देयर नाउ ऑन दिस आइलैंड? Could you repeat the question? So you have a, it's just a very hypothetical situation. एक remote island है. यहाँ पे two organisms हैं, organism one and organism two. These two organisms mate together and produce six offsprings. कितने total organisms हैं? 9. So it's this is organism number two. This is organism number one. Oh, So okay. Then they're like 6. Oh no, so wait. 8. Sorry. एट बिल्कुल. मेल पेरेंट, फीमेल पेरेंट प्लस सिक्स, एट. एट ऑर्गेनिजम्स अब इस आइलैंड पर हैं. द प्रॉब्लम इज इस आइलैंड पर देर इज ओनली फूड अवेलेबल फॉर थ्री पीपल टू सर्वाइव. इस आइलैंड पे फूड इज ओनली अवेलेबल फॉर थ्री पीपल टू सर्वाइव.
तो एक आइडियल सिचुएशन में पेरेंट्स को क्या करना चाहिए था? हाउ मेनी ऑर्गेनिज्म शुड दे हैव प्रोड्यूस्ड इफ द फूड इज ओनली फॉर 3 पीपल टू सर्वाइव? सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करना चाहिए था, राइट? सो दैट वन ऑर्गेनिज्म, वन ऑफस्प्रिंग प्लस टू पेरेंट्स, तो टोटल 3 हो जाएंगे एंड ऑल 3 ऑफ देम वुड बी एबल टू सर्वाइव। Uh, no. अच्छा, let me repeat my question. हमारे पास in this island right here we have a male parent and a female parent, that's 2 people. They produce 6 offsprings, total 8 organisms हो जाते हैं। इस आइलैंड पर खाना in order to survive सिर्फ 3 लोगों के लिए है। तो you have the 2 parents obviously, and then if we want ऐसी सिचुएशन जहाँ पे ये 2 पेरेंट्स भी सर्वाइव करें एंड उनके ऑफस्प्रिंग्स भी सर्वाइव करें, तो कितने ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होने चाहिए थे आइडियली? One. वन, क्योंकि लेट्स सपोज अगर 2 ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते तो अब तो टोटल 4 लोग हो जाते, खाना तो सिर्फ 3 लोगों के लिए। सो वन ऑफ देम वुड नॉट बी एबल टू सर्वाइव, इज दैट राइट? Yeah. सो इन एन आइडियल सिचुएशन वन ऑफस्प्रिंग शुड बी प्रोड्यूस, लेकिन 6 क्यों प्रोड्यूस हुए? दिस इज व्हाट ओवर प्रोडक्शन मींस। सो लेट मी राइट डाउन द डेफिनेशन नाउ, एंड फिर हम ये देखते हैं कि व्हाई डज ओवर प्रोडक्शन एक्चुअली हैपन। सो ओवर प्रोडक्शन, इसलिए ओवर प्रोडक्शन का मतलब क्या है? More organisms are produced beyond what the environment can support। ज्यादा organisms produce होते हैं beyond what environment जो support कर सकती है। But we know this is a bad thing. Why is this actually happening? So, factor number one, the parents जो कि offspring produce करते हैं, they know कि not all of the offsprings are going to reach adulthood। कुछ offspring जो produce होते हैं वो already before reaching adulthood वो die off कर जाते हैं। So in that sense, wouldn't be it be a better thing to produce more and more offsprings, क्योंकि already उनको पता है कि ज्यादातर तो adulthood पे पहुंचने नहीं वाले। Yeah. So it would be a better idea to produce more and more offsprings because not all will reach adulthood। तो वो अपने बस चांसेस बढ़ाने के लिए कि ज्यादा से ज्यादा एडल्टहुड पे पहुंच जाए, हम ज्यादा से ज्यादा ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करें। सो नॉट वन will not sorry not all will reach adulthood। And number two, what they do is because of overproduction they are increasing chances of species survival। Let's take an example। अगर सिर्फ एक ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता एंड लेट्स सपोज वो ऑफस्प्रिंग डाई ऑफ कर जाता, wouldn't their generation end right there? There would be no one, right, to pass on the features of the generation। Yeah. Generation तो वहीं पे खत्म हो जाती। But compare that to having 4 offsprings, even if one dies off, you still have 3। So what they're doing is they are increasing the chances of the survival of the species, increasing the chances of species survival। तो ये 2 रीजंस है जिसकी वजह से ओवर प्रोडक्शन होती है। नाउ व्हाट इज द सेकंड प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन? नंबर टू, वेरिएशन इन द ऑफस्प्रिंग। जो ऑफस्प्रिंग्स बहुत सारे प्रोड्यूस होते हैं उन ऑफस्प्रिंग्स के बीच में वेरिएशन आ जाती है। अब ये वेरिएशन किस तरीके से आती है? ऑब्वियसली क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट जीनोटाइप्स होते हैं, मतलब जेनेटिक वेरिएशन। एंड वी नो कि जेनेटिक वेरिएशन के कॉजेस क्या हैं? रैंडम फर्टिलाइजेशन ऑफ gametes, म्यूटेशन, रैंडम मेटिंग, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, क्रॉसिंग ओवर। हमें सारे ये फैक्टर्स हम पढ़ चुके हैं। सो जेनेटिक वेरिएशन की वजह से differences in observable features होती हैं, phenotypic variation होती है। And if this sounds really confusing right now कि overproduction and variation का क्या ताल्लुक है natural selection से, in the example we are going to do at the end, we'll relate all of these 4 principles together। So just hold that thought for a second। अच्छा, so that is
प्रिंसिपल नंबर 2 के सारे ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस होते हैं, हर ऑफस्प्रिंग एक दूसरे से अलग होता है इन टर्म्स ऑफ देयर ऑब्जर्वेबल फीचर्स। नंबर 3, कुछ सिलेक्शन प्रेशर्स होते हैं, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट। कुछ सिलेक्शन प्रेशर्स होते हैं जिसकी वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ लिमिट हो जाती है। सो सिलेक्शन प्रेशर्स limiting population growth. A very, very good example of a selection pressure is, let's say, predation. अब let's take an example. 6 offsprings produce होते हैं, out of which 3 offsprings are yellow in color and 3 offsprings are black in color. Which category of offsprings, yellow or black, do you expect to be more visible or more exposed during night time? The yellow. द येलो वंस ऑब्वियसली, क्योंकि रात के वक्त, नाइट टाइम के वक्त ब्लैक ऑफस्प्रिंग्स कैमोफ्लेज हो जाते हैं इन द इन्वायरमेंट। येलो बहुत ज्यादा एक्सपोज होते हैं बिकॉज ऑफ द ब्लैक बैकग्राउंड, ब्लैक नाइट, ब्लैक स्काई, उसकी वजह से। अब लेट्स सपोज कि एक लायन आता है और एक फॉक्स आता है, एंड दीज टू आर प्रेडेटर्स। व्हिच ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी would they prey on more easily, the black या the yellow ones? Yellow. The yellow ones, क्योंकि ये ज्यादा exposed है। So can we say कि black वाले organisms are more suited to the selection pressure? एक Yes. organism, yes, एक environment में condition आई। condition क्या थी? predation की। अब ये जो कंडीशन आई, हमें ये देखना है कौन से ऑर्गेनिजम्स इस कंडीशन, इस सिचुएशन के साथ ज्यादा अच्छे तरीके से डील कर सकते हैं। सो द ब्लैक ऑर्गेनिजम्स वर एबल टू डील विद इट बेटर, दे वर एबल टू कैमोफ्लेज, बट येलो नहीं कर पाए। तो which one is the fittest to survive, the yellow or the black one? Yellow वाले तो prey हो गए, right, by the predators, Yeah, so yeah. only the black ones are the fittest organisms which are able to survive and reproduce. This is what we mean by survival of the fittest. So, true or false? Selection pressure creates an organism, creates a competition between organisms of the same species. Yes. ट्रू, बिल्कुल। सिलेक्शन प्रेशर की वजह से कंपटीशन बन गया। अब येलो ऑर्गेनिजम्स और ब्लैक ऑर्गेनिजम्स compete कर रहे हैं कि कौन सरवाइव करेगा, लेकिन ब्लैक वाले आउट compete कर गए, ब्लैक वाले जीत गए ये कंपटीशन बिकॉज दे वर मोर suited to the selection pressure. So let me write everything which I just said right now. So survival of the fittest. You can even write this answer, this phrase in your answers. ये marking scheme में भी कभी कभार होता है। Survival of the fittest का part. So only the fittest organisms are able to survive and reproduce. And again, just repeating myself कि fittest का मतलब ये नहीं होता सबसे ज्यादा physically fit. Fittest का मतलब होता है कि the ones which are best suited या best adapted to the selection pressure. एंड सिलेक्शन प्रेशर का सिनोनिम या सिलेक्शन प्रेशर का दूसरा नाम क्या होता है? इसका दूसरा नाम होता है अ कंडीशन इन द एनवायरनमेंट, क्योंकि हम नेचुरल सिलेक्शन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे वी आर नॉट द वंस हु आर चूजिंग कि कौन सा ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेगा, इट्स द एनवायरनमेंट चूजिंग बाय प्लेसिंग कंडीशंस। जो ऑर्गेनिज्म कंडीशन के साथ बेहतर डील कर पाया वो फिटेस्ट है टू सर्वाइव। सो कंडीशन इन द एनवायरनमेंट। तो क्या यहाँ तक एवरीथिंग इज क्लियर? Yeah, it is. ऑल राइट। अच्छा, अब लेट्स कंटिन्यू विद दैट सेम एग्जांपल। ब्लैक ऑफस्प्रिंग्स वर्सेस येलो ऑफस्प्रिंग्स। येलो ऑफस्प्रिंग्स तो प्रे हो गए, दे वर प्रेड ऑन। इसका मतलब कि ओनली द ब्लैक ऑफस्प्रिंग्स आर लेफ्ट इन दिस वर्ल्ड।
Can we now say that only the advantageous alleles are passed on to the next offspring? Yes. अब अगेन एलील्स तो दोनों में थे। पहले ऑर्गेनिज्म जो पहली कैटेगरी थी उसमें एलील्स थे व्हिच मेड द ऑर्गेनिज्म येलो। दूसरे में और दूसरे ऑर्गेनिज्म में एलील्स थे व्हिच मेड द ऑर्गेनिज्म ब्लैक। बट ओनली द ब्लैक ऑर्गेनिज्म वाले एलील्स फायदेमंद हैं, एडवांटेजियस हैं। व्हाई? बिकॉज देयर कलर हेल्प देम टू सर्वाइव। इसीलिए इन एलील्स को हम कहते हैं एडवांटेजियस। सो दिस इज पॉइंट नंबर 4। only the advantageous alleles are passed on to the next offspring. Advantageous alleles passed on हुए, वो alleles जो फायदेमंद नहीं थे वो तो pass down होंगे ही नहीं because the organism which had that got preyed on. This means summary में, sorry 1 second. So yeah, so this means number 5 कि अब finally we understand कि allele frequency में change क्यों आता है. So we see a very, very visible change in the allele frequency. And changes in allele frequency का दूसरा नाम evolution होती है. Right, so let's summarize this now. There are 4 principles or 4 points we need to talk about whenever the question is कि natural selection allele frequency में change कैसे लाती है. Number 1, overproduction होती है. ज़्यादा organisms produce होते हैं than what the environment can handle, than what the environment can support. ये क्यों होता है? Because the parents know that not all of the organisms will reach adulthood and not all of them will survive. So by producing more organisms than what the environment can handle, we are increasing the chances of species survival. Number 2, ये सारे ऑफस्प्रिंग्स जो प्रोड्यूस होते हैं उनमें वेरिएशन होती है। कुछ येलो थे, कुछ ब्लैक थे हमारे वाले एग्जांपल में। एंड सिलेक्शन प्रेशर जब आया तो नाउ देयर इज अ कंपटीशन। सिलेक्शन प्रेशर मतलब देयर इज अ कंडीशन इन द एनवायरनमेंट के अब प्रेडेटर कम्स इनटू द पिक्चर। सो नाउ देयर इज अ कंपटीशन, येलो सर्वाइव करेगा या ब्लैक सर्वाइव करेगा? ब्लैक करेगा बिकॉज इट इज बेटर सूटेड टू द सिलेक्शन प्रेशर। इसका मतलब वो वाले एलील्स which are responsible for coding for the color black are the advantageous alleles passed on to the next generation, जिसकी वजह से अब overall allele frequency में change आया and that eventually is called evolution. So we give an example while relating all of these 5 things right here. Acha, next topic. Let's talk about the different types of natural selection जो हमें देखने को मिलता है। अब नेचुरल सिलेक्शन भी अलग अलग टाइप्स की होती है, लेकिन व्हाट्स कॉमन बिटवीन देम? ऑल सारी जो डिफरेंट टाइप्स की होती है ना नेचुरल सिलेक्शन, ऑल ऑफ देम डिफर ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिलेक्शन प्रेशर। मतलब कि जो व्हाट वी आर लुकिंग एट द फर्स्ट टाइप जस्ट इन अ सेकंड, इट्स गोना हैव अ डिफरेंट सिलेक्शन प्रेशर। द अदर वन इज गोना हैव अ डिफरेंट सिलेक्शन प्रेशर या डिफरेंट एनवायरनमेंट की कंडीशन। सो ऑल टाइप्स of natural selection differ या वो एक दूसरे से अलग क्यों है on the basis of their selection pressure. So let me ask you this. Could you tell me the different types of natural selection? This comes up as an application type का question in P4 for different Yeah, types of, so yeah. there's like a stabilizing, I think that one you're talking about. Okay, stabilizing. Okay. Stabilizing selection, there's directional selection, and there's disruptive selection. Disruptive selection. बिल्कुल सही. So let's write down all of these 3 and we'll talk about them one by one. Stabilizing selection. So let's talk about this first. Stabilizing selection उस तरीके का natural selection होता है जहां पे selection pressure फेवर करता है mean value को। mean value का मतलब average value को। and
it acts against the extremes. So let's take an example. Let's say we draw a graph, और उस ग्राफ में y axis को हम ले लेते हैं as the frequency, as in the number of organisms for a particular y value, and for a particular x value, and x axis में हम ले लेते हैं phenotype कोई भी. For example, हम इस वक्त ले लेते हैं height as a phenotype. तो बहुत सारे organisms belonging to the particular species की different different heights हैं. An example of continuous variation. तो यहाँ पे it starts, the graph starts from here, इस तरीके से, and इस तरीके से. So you basically have this first extreme, the lowest possible height of an organism, the greatest possible height of an organism, and वो वाली height of an organism which corresponds to the biggest frequency. इसका मतलब क्या है कि जो the height, that particular height value, which most of the organisms have, this is the middle value, the average value. अब स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन में क्या होता है कि सिलेक्शन प्रेशर इसको फेवर करता है एंड सिलेक्शन प्रेशर इसके अगेंस्ट काम करता है. सो डजंट दैट मीन कि ये वाली जो मीन वैल्यू है, द ऑर्गेनिजम्स विद हैविंग दिस मीन वैल्यू आर गोना इंक्रीज इन नंबर, and the organisms having these extreme values are going to decrease in number, उनकी frequency कम हो जाएगी. Yes. Yes, तो यहाँ पे let's write this down first and then see कि ये how does that translate to in the graph. तो selection pressure, again selection pressure मतलब condition in the environment जो कि सबसे पहले तो favor करेगा उन organisms को जिनकी mean value है, and sorry, uh, one second, and disfavor करेगा उन organisms को जिनकी extreme values है. So you could think of it like this: कि selection pressure was working on shrinking the graph. अब when you shrink the graph तो क्या होता है? यहाँ से भी ग्राफ कंस्ट्रिक्ट होता है, यहाँ से भी कंस्ट्रिक्ट होता है. लेकिन ये जो हाइट है, ये जो फ्रीक्वेंसी है, for those organisms which had the mean value, what's going to happen to this frequency? Is it going to increase or decrease? It's going to decrease. So selection pressure to mean को favor कर रहा था, right? So wouldn't more organisms now have heights which are the mean value? मतलब उनकी frequency बढ़नी नहीं चाहिए if it's favoring the mean. Oh, yeah. So for example, let's say कि extreme height यहाँ पे 0.3 meters है. Let's take this as 0.7 meters. Let's take this as 1.5 meters. अब selection pressure क्या आता है कि let's say there is a particular predator, और वो predator सिर्फ hunt करता है वो organisms को which are very short और very tall. Which means यहाँ पे selection pressure क्या है? Again, predation. किस ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट अटैक करता है? एक्सट्रीम्स, वेरी शॉर्ट या वेरी टॉल को तो वो हंट करता है. तो ये वाले ऑर्गेनिजम्स डाई ऑफ कर जाएंगे. मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स नाउ आर गोना बी टुवर्ड्स द मीन वैल्यू. दिस इज गोना बी फेवर्ड क्योंकि और जो प्रेडेटर था वो ये वाली हाइट के ऑर्गेनिजम्स को तो खाएगा ही नहीं, तो इनको तो फेवर कर रहा है, लेकिन इनके अगेंस्ट काम कर रहा है. सो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट द ग्राफ लुक्स लाइक आफ्टर अ व्हाइल. Stabilizing selection की वजह से the graph will look like this. Do you see the graph shrinking from both sides? It's become a bit thinner, you could say. More values are towards the mean value. So does that make sense? ये क्यों हुआ? Any confusion? I can't hear you if you're saying something.